Hello, dear students. Welcome to our today's class. And as we have started our chapter number 14, that is substances in common use. Okay. Today we are going to see a very interesting topics. So before moving to our today's topics, first let's revise what we have learned in our last class. Okay. So, in our last class, we have learned about some important salts in daily life. Okay, there are so many important salts which are there which we used in our daily life. Yes, and here one pH strip is given where you all know that 7 when the salt is having the value pH value between pH value 7, then it is called as what? Neutral salt. Okay, yes, if the salt having pH value less than 7, then it is called as what? Acidic. Okay, and if the salt having pH value greater than 7, then it is said to be basic in nature. Okay, then the first salt which we have seen, that is sodium chloride. Okay, it is also called as table salt, and its chemical formula is what? NaCl. Okay, so we used this salt in our day to day life. Yes, and we have seen some properties and uses of this salt. Okay, what is the use of this salt? Yes, you already know that it gives salty taste to it gives salty taste to our food and all, and you all know that the importance of salt. Okay, sometimes what happen, in some kind of hurriness, your mother, if she didn't add salt in the food, in different kinds of vegetables, bhaji and whatever, then what happens, the whole kind of taste of your food gets destroyed. Okay, एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं अपने मॉम को कि खाने में नमक नहीं है क्या. ओके, सो इट इज़ लाइक पूरा वेस्ट हो जाता है. सो NaCl, दैट इज़ some kind of, this is salt which is very important in the kind of food and all. Okay, yes, so its pH is basically its pH is neutral, that is 7. Okay, it is a crystalline and colorless salt. Yes, after that we have seen the properties and uses of baking soda, that is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate का कहाँ पे यूज़ होता है? In making of cake, ढोकला, okay, food, bread. Okay, so in that we used baking soda, that is sodium bicarbonate, and its chemical formula is what? NaHCO3. ठीक है. Yes, it is also used to reduce some kind of acidity in stomach also. Then the third is bleaching powder, which is also called as calcium oxychloride, and its chemical formula is CaOCl2. Okay, so it is basically used in the well में यूज़ होता है उसका, और स्विमिंग पूल में यूज़ होता है. द काइंड ऑफ क्लोरीन गैस विच इज़ देयर इन दिस पाउडर, it is used to destroy some kind of bacteria, viruses and insects from the swimming pool and all. So when we used to go to swimming pool, we get a kind of odor. Okay, that odor is of which gas? Chlorine gas. Okay, and the chlorine gas is also used for oxidizing agent also. ठीक है, so till this we have learned in our last class. So now next is washing soda. सबको पता है वॉशिंग सोडा क्या होता है. हमारे मदर हम यूज़ करते हैं टू वॉश द क्लोथ्स. ओके, सो वॉशिंग सोडा, इट्स नेम इज़ sodium carbonate, and its chemical formula is what? Na2CO3.H2. basically उसको Na2CO3 ही बोलते हैं. So here one kind of activity is given. Okay, you have to take a sample of water from a well or a bore well is in a beaker. तो beaker में थोड़ा पानी लेने का है, and add some kind of soap to it and stir. एंड हमें उसमें क्या डालना है? सोप डालने का है. वॉशिंग सोडा नहीं डालना है, सोप डालना है. देन वी हैव टू टेक अनदर सैम्पल and we have to add washing soda over here, and we have to stir it, and we have to observe the changes. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलता है? द हार्ड वाटर फ्रॉम अ वेल
वेल और बोरवेल का जो वाटर होता है वो हार्ड होता है. ओके, इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड वाटर. येस, सो इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन एडिंग वॉशिंग सोडा. ओके, तो हम इसमें वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है. द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स of calcium and magnesium in it. So it is the presence of what? Hardness क्यों होता है? Chlorides and sulfides. So when Na2CO3 is added to it, it softens such water and make it suitable for us. Okay, तो जब हम पानी में Na2CO3 दैट इज़ वॉशिंग सोडा हम ऐड करते हैं तब वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर हम उसमें कुछ क्लोथ डालेंगे तो उसके ऊपर भी ये पानी का कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो वो सॉफ्ट वाटर जो है वही यूज़ करते हैं किसके लिए? टू वॉश द क्लोथ्स. ओके, नाउ द रिएक्शन ऑफ Na2CO3 causes the formation of insoluble carbonate salt and magnesium and calcium. So here you can see magnesium. Okay, and here the reaction of Na2CO3 and MgCl2 is used. Okay, so magnesium is formed over here. Okay, yes. Now here you can see sodium carbonate is a water soluble salt of sodium. ये water soluble salt है किसका? सोडियम का. So crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization, and here you can see a white color powder is obtained, that is called as what? Washing soda. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन को रिड्यूस्ड करते हैं, लूज करते हैं to form Na2CO3.H2, that is washing soda. So what is the properties and uses of this washing soda? It is used, it is a whitish and odorless powder. Okay, यहाँ पे देखा सबने whitish color powder है ये. You all know that, you have observed in your daily life at your home. Yes, so it is a whitish and odorless powder at room temperature. Litmus has a blue color in its aqueous solution, and here you can see it is a hygroscopic. मतलब क्या? It absorb moisture, वो moisture को absorb करते हैं if left exposed to air. जब air को exposed करेंगे तो वो जो है वो moisture को absorb करने में use होता है. It is mainly used for washing clothes. Yes, and sodium carbonate is used in the glass and paper industry for refining of petrol. ओके, तो इसका इतना सारा यूजेस है वॉशिंग सोडा का. ठीक है, नाउ सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट. देर आर सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सबको पता है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? येस, सो हियर यू कैन सी सम सब्सटेंस इन आवर डेली यूज विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज एलम. पोटैश एलम बोलते हो इसको. पोटैश मतलब क्या? K2SO4, Al2SO43 एंड 24H2. तो ये बेसिकली इतना कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू सी द नेम्स. बोरैक्स दैट इज़ Na2B4O7 एंड 10H2O. एप्सम सॉल्ट दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड 7H2O. बेरियम क्लोराइड दैट इज़ BaCl2.2H2O. and sodium sulfate that is Clabor salt Na2SO4.10H2O. So these are the salt which contain the water of crystallization. Okay, yes, so you have to remember these names. Okay, now you have learned that alum is used in the process of water purification. तो water purification के process में alum used होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेशन. कोएगुलेशन मतलब क्या? एक हो जाना. ओके, हम मिक्स हो जाना, लाइक दैट. द सॉलिड इम्प्यूरिटीज इन वाटर कम टुगेदर, बिकम हैवी एंड सेटल टू द बॉटम. सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? इट कम्स टुगेदर एंड इट बिकम्स हैवी एंड इट यूज टू सेटल डाउन एट द बॉटम. सो एज अ रिजल्ट वॉट हैपन? द वाटर अबाव बिकम्स क्लियर. ओके, तो अगर जो इम्प्यूरिटीज़ है वो नीचे ऐड हो जाएगी तो सामने का वाटर जो है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, जो भी वेस्ट है वो नीचे ऐड हो जाएगा बॉटल के नीचे. अगर
फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ सम काइंड ऑफ वेस्ट इज़ देयर इन द बॉटल और उसमें पानी भी है, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट जो है वो नीचे जमा हो जाएगा और पानी, ऊपर का पानी वो क्लियर हो जाएगा, लाइक दैट. Blue vitriol is also used in blood test for diagnosis anemia, and it is also used as a fungicide on fruits like grapes, muskmelon, shark lime. Okay. Now soap. Soap is a very important topic and it is very easy topic. सबको पता है क्या होता है. Yes. So when oil animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, sodium or potassium salts of carboxylic acid, that is called as fatty acid, are formed, and these salts क्या, उसको क्या बोलते हैं, soap. Okay, so basically the soap is formed by the salt. Okay, when soap is mixed with hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed and they form a precipitate, and that is why the leather is not formed. Okay, तो ये जो है वो कहाँ से formed होता है, soap fatty acid, it is formed by salt. Okay, उसको हम बोलते हैं here you can see from which salt, sodium and potassium salts. Okay, yes. Now radioactive substances, सबको पता है, that is in your last standard you have already learned this, that the element with the high atomic number such as uranium, thorium, radium have the property of emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. वो radiation को emit करते हैं. Okay, yes, and this property is called as what, radioactivity. Radioactivity, which means emission of radiation. Okay, a substance having this property is called as radioactive substance, obviously. So the nucleus of the radioactive element is unstable. Here you can see the radiation occurs from an unstable nucleus. तो वो जो nucleus है वो unstable होना चाहिए. Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, let us learn something more about it. 3 types of radiations are given from the radioactive substance. Here you can see alpha rays, beta rays and gamma rays. Okay, alpha rays, gamma rays यहाँ पर है, beta ray यहाँ पर है. पहले alpha rays formed होता है, फिर beta rays, फिर gamma rays. And here you can see a lead box, and this is a radioactive substance. This is a slit. Okay, here you can see a charge plates, positive and negative. Okay, now नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, तो किसने किसने क्या डिस्कवर किया, सो लेट्स सी दैट. इन 1889 रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियम वेर ऑफ 2 टाइप्स. तो उन्होंने क्या बोला, रेडिएशन जो है वो 2 टाइप्स में एमिट होता है. दे आर कॉल्ड एज अल्फा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन. अल्फा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन. बट विल्फ्रेड डिस्कवर्ड द थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज गैमा रेडिएशन. ये बीच की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, गैमा रेडिएशन. व्हेन दिस रेज आर अलाउड टू पास थ्रू 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दे गेट सेपरेटेड. तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों अपोजिट है, और यहाँ पे ये रेज जो है वो सेपरेट हो गए. ओके, दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुदरफोर्ड इन 1902. So Rutherford and Williams studied the radiation emitted by the radioactive substance. For this purpose, what happened? The rays were allowed to pass through the electrical field. Here you can see, okay, and the plate. Okay, so it was found that the radiation gets emitted in 3 types. One type जो है, the radiation deviated slightly towards the negatively charged plate. यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये ग्रीन कलर की लाइन कहाँ से जा रही है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है. ओके, येस. वाइल द सेकेंड टाइप ऑफ रेडिएशन डेविएटेड टू द पॉजिटिव चार्ज प्लेट. यहाँ पे येलो वाली लाइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से जा रही है. एंड द थर्ड टाइप इज़ व्हाट, इट डिड नॉट डिविएटेड एट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे देखो थर्ड टाइप जो है वो वैसे की वैसे ही जा रही है, वो एमिट नहीं हो रही है, वो उसका कुछ ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहा है. सो
The rays which deviated slightly towards negatively charged plate are called as alpha rays. तो ये ग्रीन वाली लाइन ये नेगेटिव की यहाँ पे जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा रेज. Then the rays which deviated towards the positively charged plate, यहाँ पे you can see, so it is called as what, beta rays. Okay, and the rays which do not deviate, मतलब वो reflect नहीं हो रही है, that is called as what, gamma rays. So there are 3 types of rays: alpha rays, beta rays and gamma rays. The diagram is very easy. Okay, go through the content. Thank you.